Gaming space has become really difficult because of the kinds of discounts and pace really, I think, thodi shaken up ho gayi because of the amount of money that was put in and the amount of burn that startups did just to acquire users. Hello, guys, and welcome to the 50th episode of Entrepreneur Talks by the Spotlight India. Yes, 50 एपिसोड पूरे हो गए इस पॉडकास्ट को, तो उसी की वजह से मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड जितने भी एंटरप्रेन्योर्स इस पॉडकास्ट पे आए हैं उन सभी को फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ. तो अगर आप एक न्यू व्यूअर हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. But apart from that, this is just another milestone for us because our vision is to create desire and clarity in decision making in aspiring entrepreneurs. तो उसके लिए कोशिश जारी रहेगी by putting out new episode every week on Monday at 7:15 PM. और इस ओकेजन को और स्पेशल बनाने के लिए आज हमारे साथ है कुश देसाई, जो फाउंडर है ट्वेल्थ मैन के. ट्वेल्थ मैन एक स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप है, और अगर मैं आपको इंडिया की स्पोर्ट्स फैंटेसी इंडस्ट्री के बारे में बताऊं तो वर्ल्ड का बिगेस्ट मार्केट है इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री विद 13 करोड़ यूज़र्स. आज इस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू 34,000 करोड़ है, जो 2025 तक 1,65,000 करोड़ बन जाएगी. तो सोच लो कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ये. इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमने बात की है कि अगर एक नए प्लेयर को एंटर करना है इस इंडस्ट्री में तो क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है, व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस टू स्केल sports fantasy apps. Apart from that, we also talk about Kush as an entrepreneur. तो बिकॉज कुश एक बहुत ही यंग entrepreneur, तो वो कैसे ओवरवेलमिंग सिचुएशन से डील करता है, उनकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से डिसीजंस लेता है, उन सभी के बारे में हमने बात की है इस एपिसोड में. वी आर नाउ अवेलेबल ऑन ऑल द मेजर ऑडियो प्लेटफॉर्म सच एज गो एंड सर्च entrepreneur talks by the Spotlight India, and you will find the audio version of this podcast. So without wasting any further time, Kush Desai, founder of 12th Man, on Entrepreneur Talks. Like, how are you growing up as a child? Like are you a shy kid? Are you an introvert kid or full on extrovert? सबके जाके बात कर रहे हैं. So yeah, I sort of transitioned. I was a बहुत ही ज्यादा बोलता था. उससे नाउ आई हैव बिकम बहुत ही, मतलब जब बोलना होता है तभी बोलता हूँ. राइट. क्योंकि अगर मेरा थोड़ा ये फंडा हो गया है कि अगर सब बोलेंगे तो सुनेगा कौन. सो हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा सुनता हूँ. राइट. बट लिसनिंग इज अ गुड क्वालिटी टू हैव. No, no, I agree. And I think this shift sort of started 11th, 12th में. And then just started happening. और फिर टीनेज बीच बीच में ऐसे सेल्फ डाउट, ये हाँ. वो अलग अलग चीजें. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि क्या कर रहा हूँ. सो बीच में थोड़ा वैसा भी फेज आया था जब पढ़ाई वगैरह में आई वाज नेवर रियली गुड. सो वो सब चीज़ों से ऐसे कॉन्फिडेंस टेकिंग अ नॉक, एंड देन यू स्टार्ट कोरिलेटिंग थिंग्स दैट oh, I'm not confident, that's why I'm an introvert, or I'm not able to talk, or yeah, this that. uh, but yeah, over time you just realize that it is what it is, and there's no good or bad. Whatever you're comfortable with, you do. And yeah. अपने खुद के स्किन में कॉन्फिडेंट होना पड़ता है. यू हैव टू एक्सेप्ट योरसेल्फ आल्सो बिकॉज़ Yeah, I agree 100%. You need to have a good relationship with yourself in order to be able to have good relationships with others. So मैंने एक I came across this really good reel actually on Instagram. So I don't know if you've heard about Wentworth Miller. So Prison Break नाम का एक शो, if you would have हाँ, heard of. हाँ, तो उसमें प्रिज्म जो, ब्रेक. हाँ, I think उसमें one of the lead actors, उसका नाम Wentworth Miller है. ओके. So he was talking to someone, and in that reel, he's like, so I'm going to paraphrase and basically हाँ, summarize, हाँ, but हाँ. essentially what he was saying is कि कभी भी कुछ ऐसे आप गलती करते हो या मिस्टेक कर, some big mistake you do, uh,
तो योर इनिशियल रिस्पॉन्स टू योर सेल्फ इज कि क्या कर रहा है, पागल है, दिस दैट, यू टॉक डाउन टू योर सेल्फ नेगेटिवली एकदम. So then he's like, you do that to yourself. And now imagine you talking that way to your best friend every time something happens. And then he asks, do you think that person would want to be your friend? So the answer is naturally no. So he's like, अगर खुद के साथ ही ऐसा करोगे तो खुद के साथ कैसे मतलब ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे. So basically, be good to yourself, don't be too hard on yourself. So, and I mean, I agree, easier said than done, क्योंकि when हम्म. you're running a startup, you make mistakes, हाँ. you sort of uh, start questioning yourself, you're hard on yourself. So हाँ. over time you learn to balance things out, but that's just a journey you have to go हम्म. through. हम्म. अपने And आप the को. journey, in fact, that I'm still going through. So अभी लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अपने आप को माफ कर लेते हो, लाइक इफ यू आर टेकिंग लाइक फाइव लाइक डिसीजंस, तुम्हें पता है लाइक यू आर गोइंग अगेंस्ट द टीम एंड यू आर गोइंग विथ योर कन्विक्शन कि hmm. लाइक आई एम फीलिंग लाइक कि ये चलेगा, ये चमकेगा, ऐसा कुछ तुमने डिसीजन लेते हो एंड इट जस्ट कंप्लीटली गोज साइडवेज कि अरे यार, देन यू एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ कि नहीं ठीक है, गलत डिसीजन लेंगे बट उससे सीखेंगे एंड वी विल move ahead. So I think there are two things. Hmm. One is taking a decision and being okay with it. So I'm okay with the decisions I take. Okay. उसमें मुझे एकदम ही वो फर्क नहीं पड़ता, सही तो Can सही, you गलत तो गलत. can you go deep But on this? हाँ, Can you go deeper on this? yeah, I am going deeper in this. So I was just sort of setting the Foundation. foundation. So मेरे लिए वो तो एकदम ही वो है कि अगर डिसीजन मेरा नहीं हुआ, देन आई विल बी लाइक कि यार ये नहीं लेना. इफ इट डजंट गो राइट, देन आई आई विल बी लाइक यार ये नहीं सुनना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन विथ व्हाट आई वाज फीलिंग, दिस दैट. सो दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ, बिकॉज टू एन एक्सटेंट यू पिन थिंग्स ऑन द इन्फ्लुएंस कि इसकी वजह से ये डिसीजन हुआ है. Hmm. सो वो तो मेरा 9 out of 10 टाइम्स वही रहता है कि डिसीजन तो मैं ही लूंगा, क्योंकि आई नीड टू बी, आई विल बी फाइन विथ वट एवर द आउटकम इज. Hmm. अगर अच्छा होगा तो आई विल प्रेज द टीम, बुरा होगा तो आई नो कि हाँ ठीक है, गलती हो गया. सो Hmm. नाउ बुरा होगा तो और गलती हो गया, दैट्स द सेकेंड पार्ट दैट यू मैंशन, कि आर यू एबल टू फॉरगिव योरसेल्फ. सो ओवर हियर, इनिशियली व्हेन आई लॉन्च्ड, सो द थिंग विद स्टार्टअप्स इज कि मिस्टेक्स का भी मैग्नीट्यूड बढ़ता है. कि आप बेसिकली ये लेवल पे खेल रहे हो तो ये लेवल पे इससे ज़्यादा मिस्टेक नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इजी लेवल है. हाँ. फिर आप नेक्स्ट लेवल पे है, वहाँ पे ये मिस्टेक हो पाएगी, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी. बेसिकली द डाउन साइड इंक्रीजेज एज एंड व्हेन द स्केल इंक्रीजेज, Hmm. क्योंकि तब डिसीजंस का इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा होता है. मोर मनी इन्वॉल्व, मोर यूजर्स ऑन योर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की ज़्यादा विजिबिलिटी है, ऑल Hmm. दोस थिंग्स. सो initially, especially if you're a first time entrepreneur, initially the mistakes weigh down on you, क्योंकि when you start with this ideal mindset कि अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा हो जाएगा. Hmm. बट देन यू रियलाइज कि सिर्फ ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा नहीं है, ये करूंगा तो ये होगा. सो यू बेसिकली लर्न हाउ टू डाइव डीपर इनटू थिंग्स. सो माय biggest reality check was when I launched 12th Man. मुझे लगा था कि दुनिया गलत है, मैं सही हूँ हाँ. बेसिकली. कि Hmm. इतनी बड़ी बड़ी टीम्स कौन रखता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक मार्केटिंग एजेंसी चाहिए मार्केट करने के लिए, Hmm. मुझे एक दो लोग चाहिए इंटरनली जो Hmm. मार्केटिंग एजेंसी के साथ बात कर सके, समझ सके, Hmm. आइडिया दे सकते हैं. एंड मुझे एक टेक एजेंसी चाहिए जो प्रोडक्ट बनाएगी. Hmm. इंटरनली क्यों रखनी है टीम, Hmm. ऐसे मस्त आराम से कन्वीनियंटली चल सकता है. Hmm. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. देन आई एम लाइक ऐप बन जाएगा, Hmm. लाइव कर देंगे, यूजर्स Hmm. आएंगे, Hmm. डाउनलोड करेंगे, खेलेंगे, पैसा बनेगा और मैं ऐसे बैठा रहूंगा. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड.
हाँ. I know that's not the right mindset. And before going into this, you already know, आपने stats वगैरह देखे ही होंगे. 9 out of 10 startups fail. ये होता है, ये होता है, this that. बट जब चालू करते हो तब वो एक घमंड आ जाता है कि नहीं, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सीईओ हूँ, मुझे हाँ. इंस्टाग्राम हैंडल पे डालना है, हाँ. दुनिया को बताना है मुझे कि मैं सीईओ हूँ. So true. बट देन धीरे धीरे आपको होता है कि यार लोगों को नहीं दिखाना, अभी मैं पहले सब सीख लेता हूँ ढंग से. हाँ. हाँ. Then reality takes over. Yeah, so that's when reality hits in. Initially, you're doing it to show people, and then you're you just want to, sort of hone in on your skills and play and build on your craft in silence, हाँ. because you realize कि यार it's not as a glamorous. It's not glamorous at all. It's fun when you're doing something you enjoy, but it's not fun every day either. Yeah. So, अभी most recent example do तो for our product, May to July, the 3 months were horrible. I didn't enjoy coming in every day, but you just sort of have to, because you don't want to turn your back on something you've put in so much time building. And at the same time, your sort of role evolves company में, क्योंकि at that point you have a team, so you have to put up a front in front of them कि नहीं नहीं हो जाएगा. झगड़े हो रहे होते तो आप झगड़े सॉल्व करते हो कि अरे नहीं नहीं कोई नहीं हो जाएगा, झगड़ा मत करो, एंड यू हैव टू गिव देम दैट कंफर्ट कि देखो सही कर लो, गलती होगी तो मैं संभाल लूंगा, वो सब आप लोग की चिंता नहीं है, आप लोग का ध्यान अभी सब सही करने में जाना चाहिए. So that part isn't fun. And the thing is, people touch upon this. आप मोटिवेशनल स्पीकर सबको देखोगे, सब बोलते हैं कि इट्स नॉट फन, ये सब होता है. बट listening to them and actually going through it are two different things. Because listening to them, you're still like कि हाँ यार अपसाइड इतना बढ़िया है कि थोड़े इश्यूज तो चलते हैं, थोड़े रोड बम्प्स तो आते हैं, बट when you're actually on that road bump, you you forget all about the upside. You're like यार ये कहाँ आ गया मैं. हाँ. हाँ. ये So coming back to, sorry थोड़ा digress कर लिया, नहीं नहीं लेकिन नहीं. coming back to your point of being able to accept failures or mistakes, uh, you dwell on it a lot when you start. I still dwell on things, but you don't as a stop to dwell on things as you move on. You keep moving ahead while ऐसे वो थोड़ा ऐसे fade out हो जाता है. And I think the next step would be कि you quickly bounce back. You don't dwell on it at all. कि हाँ ठीक है करा, सीखा, next. अभी ऐसे हाँ ठीक है करा, मैं ये सीख रहा हूँ, लेकिन यार ये क्यों हो गया, वो एक थॉट रहता है. द थिंग दैट यू सेड अबाउट कि यू नो जब मन नहीं कर रहा है तब भी तुम आ रहे हो, पैशन चलो फॉलो करना चाहिए, वो सब चीजें ठीक है ये सब, बट यू हैव टू रियलाइज कि आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम योर पैशन ऑल्सो बिकम्स बोरिंग. आज 100%. आई सपोज यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, मतलब Yeah, very. राइट. राइट. सो ये ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हें लगता है कि जब यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, ऑफ कोर्स वो अपब्रिंगिंग और वो सब के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट जब नहीं ये कॉमन पैटर्न आप देखोगे तो ये चीज होती है कि जिनके पापा लोगों ने बहुत फोड़ा होता है ना, बहुत ज्यादा अचीव कर लिया होता है, हाई चांसेस कि उनके बेटों ने इतना ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया होता है. फॉर लेट्स हम्म. एग्जांपल, लेट्स से अभिषेक बच्चन इज अ प्राइम एग्जांपल. हम्म. अभिषेक बच्चन के लिए बार इतना ज्यादा हाई है, बेचारे ने बहुत ज्यादा मेहनत किया होगा. आई लाइक हिम एज एन एक्टर. वो हम्म. जो लाइक एज अ स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर ही इज डूइंग फकिंग गुड जॉब. हम्म. ठीक है. बट द बार सेट बार इज वेरी हाई फॉर हिम बिकॉज आपने बहुत ज्यादा फोड़ लिया, वो सब है. हम्म. सो यू कैन इजिली गो इन टू दैट कंफर्ट ऑल्सो हम्म. कि फोड़ लिया है तो मैं ज्यादा क्यों मेहनत करूँ. एंड फेयर पॉइंट, क्योंकि आज अगर सपोज मान लो कि मैं पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से नहीं आ रहा हूँ, मैं काम किस लिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली जो मैंने देखा है मुझे वो मेरी फैमिली को नहीं देना है. सिंपल चीज है ये चीज. तो डू यू थिंक दैट एस्पिरेशंस घट जाते हैं कोई कोई बार,
जब व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रिविलेज कि तुम इतना ज्यादा सोच नहीं सकते हो, कि बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो कि इतना है चलो ठीक है उसको मैं थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर देता हूँ। कि या तो फिर तुरंत ही दूसरा एग्जांपल है मुकेश अंबानी का, कि पॉइंट ऑफ प्रिविलेज से तो आया पर उसको फिर उसने 100x किया। Hmm. सो लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? So, I mean, it's an interesting question, हम्म and I agree with both sides of it. Mukesh हम्म Ambani wala bhi, and you know, जैसे Ronaldo's son will never be Ronaldo. एग्जैक्टली। Messi's son will never be Messi. हम्म Zidane's three kids are professional players, but हम्म they won't be anywhere close. हम्म So I agree वैसा chances रहता है. So if you come from a privileged background, वो जो ऐसे लोग कहते हैं वो आग जो अंदर हम्म होती है वो उतनी नहीं होती, because you have comfort, you हम्म can just do whatever and chill. हाँ हाँ So while that is true, I think it also then ultimately depends on the individual. हम्म So coming from privilege can mean two things. Coming from privilege can mean that you can take it easy and just do your thing, and you won't be judged because you're born into privilege, so you have every right to enjoy that privilege. हम्म हम्म And at the same time, on the flip side, there is you have all this, you're हम्म standing on the shoulder of a giant, so you have the benefit of not having to beg people for meetings, you know हम्म worry about मैं चालू कैसे करूँ, टीम कहाँ से लाऊं, हायर कैसे करूँ. You have a lot of those things in place which eat up a lot of time and effort and energy. हम्म So the other way of looking at it is I have all these resources at my disposal. हम्म I can quickly compound whatever wherever I am हम्म and just go for it without having to worry about अगर नहीं चला तो. हम्म So my father, fortunately, so he's worked very hard all his life. मतलब उनको तो वेकेशन भी 3 दिन हो जाए तो नहीं सेट होता. And हाँ he's had to work hard because he didn't come from a privileged background, so he had to work hard. हम्म And he's been a professional all his life, so companies mein he's grown, companies he's helped grow, and now he's finally starting on his own entrepreneurial journey, which he started along with me 2019 mein. So I mean, it's about the perspectives as well. So मेरे पापा ऐसे हैं कि if he sees me slacking, he won't let me slack. He's like, मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता, कुछ तो करना है, और अबव ऑल मेहनत करनी है जो भी कर रहा है उसमें. ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज है तो रिलैक्स किया. सो फॉर सम रीजन ही वोंट, मतलब नॉट फॉर सम रीजन बट वो जो आग है ना, वो अगर मेरे में नहीं होगी ना, तो वो ऐसे चिंगारी जला जला के लगा देंगे. ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, एंड ही नॉट जस्ट विथ मी, ही डज दैट विथ एवरीवन अराउंड हिम. That he basically shows them that you have this and I'm going to push you to go harder. So in my case, over the 3 years I've gotten to spend and build a relationship with him on a professional level. आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे भी पोटेंशियली वो रियलाइज हुआ है दैट मुझे भी उनके जितना नहीं है अभी ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं वो ऐसे कीड़ा है कि यार नहीं, अब क्या, अब और कैसे करूँ, अब क्या करूँ, क्या काम करूँ. And of course, it's still a fraction compared to what he has and what he has done. But if I dig deeper and if I continue digging deeper, I will come across and, sort of let out that potential. So that's one of the things. हाँ वही। तो मतलब जज करना तो जज तो नहीं करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो फेमस कोट है ना कि टफ टाइम्स क्रिएट ग्रेट मैन Uh, क्रिएट्स गुड strong टाइम्स, men, strong स्ट्रॉन्ग men मैन create क्रिएट गुड easy टाइम्स, times, easy गुड times मैन create क्रिएट weak सॉफ्ट, men. हाँ हाँ. वीक मैन क्रिएट्स टफ टाइम। हाँ, तो हाँ. कुछ हद तक तो ये सही सही चीज है ही। तो क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन क्यों क्यों भी पूछा, क्योंकि ये
इसकी वजह से पूछा बिकॉज व्हेन यू सी रोनाल्डो, राइट, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ठीक है, टैलेंट है, वो सब है, बट उसने जो बिल्ड किया, लाइक थ्रू कंसिस्टेंसी एंड प्योर हार्ड वर्क। sheer hard work. हाँ, कि बनना है बेस्ट, जो भी हो जाए, 5 घंटे जिम में डालना है डालूंगा, करूंगा, रिकवरी करूंगा, 5 घंटे ट्रेनिंग करूंगा, सब कुछ करके, एंड ही रिपीटेड द इनफ एंड इनफ एंड इनफ। और उसके बाद ये हुआ Yeah. इंटरेस्टिंग। नाउ यू यू टुक कॉमर्स, राइट, 11th 12th? So I was in IB. ओके। आईबी IB क्या होता बोर्ड में है? था. हाँ. आईबी क्या होता है? International Baccalaureate. ओके। It's an international board. So I did my high school in boarding school, in a boarding अच्छा, school, अच्छा, 9th to 12th, the international school Bangalore. ओके, So I went there in ninth or 10th में IGCSE, which is a UK का board. हाँ, आपने GCSE सुना होगा. हाँ, So that I did. And 11th 12th में IB diploma होता है. And then I went to Boston University. तो तब 11th 12th में सोचा था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस ये कुछ करूँगा. क्यों? क्योंकि पापा फाइनेंस में है, और पता नहीं ऐसे 11th 12th में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कूल लगता था. आई थिंक आई रियलाइज फर्स्ट सेमेस्टर इन दैट बोरिंग है फाइनेंस. तो बस इतना पता था कि जॉब करूंगा, कुछ भी करूंगा लाइफ में, फुटबॉल कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए. क्योंकि वही एक चीज थी विच इज द सेफेस्ट बेट फॉर मी. फुटबॉल एंड गेमिंग, दीज थिंग्स आई लाइक, आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन बी क्रिएटिव थोड़ा. हाँ, बाकी सब ज्यादा पता नहीं था. आफ्टर मूविंग बैक टू इंडिया towards the end of fourth year, one of my friends told me about Dream 11. तो हाँ, मैंने बोला कि यार ये तो I've hit ऐसे गोल्ड, खजाना मिल गया है. क्योंकि गेमिंग इन इंडिया वाज पिकिंग अप एंड fantasy football I've been playing ninth grade, sir. So हाँ, fantasy gaming, India, starting my business, that was like a marriage of two big areas of interest for me. So 2019 moved back, break एकदम ही नहीं लिया, and हाँ, just started work on this fantasy gaming app. So in fact, I haven't taken a break yet after graduation. So I हाँ। still need to take a break. देखते हैं कब मिलता है. नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया कि ब्रेक लिया नहीं जा सकता. अब हाँ, वैसा होता है कि यार मिस आउट हो रहा है. एग्जैक्टली, हाँ। ये तो एक दिस थिंग कि मिस आउट हो रहा है, यू कांट टेक, यू इफ यू आर टेकिंग अ डे ऑफ फ्रॉम योर बिजनेस, यू फील लाइक कि ओ शिट, ये 5 काम थे, ये कर लेता मैं, Yeah, ये and you सब। don't necessarily do it because you love doing it हाँ, every day. हाँ, If इतना पैशन है कि यार एक दिन भी नहीं छूट सकता, वैसा नहीं हाँ, है. Sometimes you हाँ, just genuinely can't, क्योंकि आपको पता है मैंने छुट्टी ली तो बहुत काम बढ़ जाएगा. हाँ, यू स्टार्टेड दिस, यू नो तो तुम्हें पता था कि फैंटेसी नई चीज है, रिलेटिवली नई चीज है, बट देर आर ऑल्सो प्लेयर्स इन इट कि जो कर रहे हम्म. हैं वो कर रहे हम्म. हैं। एंड तुमने जब चालू किया, यू वर फोकसिंग मोर ऑन फुटबॉल ओनली फैंटेसी है। Yeah, we started off as a football only app बनाया था. हाँ, हाँ। तो लाइक जब तुमने फुटबॉल फैंटेसी वाला रिसर्च किया, व्हाट वर सम ऑफ दोस रिजल्ट्स दैट केम आउट ऑफ दैट रिसर्च, कि दैट यू वांट टू स्टार्ट विद फुटबॉल फैंटेसी ऐप, और यू जस्ट वेंट विद कन्विक्शन कि मुझे पसंद है, ये है, मुझे लग रहा है कि मार्केट है, करते हैं। So I'll be honest with you, I didn't do any research. ओके, ओके, I was just like करना है इसलिए करते हैं. अच्छा, हाँ, कि तुमने देखा कि फुटबॉल लोग देख रहे हैं। I mean, I knew broadly कि football is growing in the country because of हाँ, ISL. All those things I looked at. But all those things I looked at, I had been looking at regardless, not because of this. कि चालू करना है इसलिए. स्टार्टअप चालू करना है, हाँ, So that was always there. कि football is growing in the country. हाँ, And yeah, KPMG, and at that point FIFS was called IFSG. हाँ, तो उनका भी एक जॉइंट स्टडी आया था जिसमें फुटबॉल वाज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर इन ग्रोइंग स्पोर्ट आफ्टर क्रिकेट. सो आई वाज लाइक ठीक है कर लेते हैं. फुटबॉल सही है, मतलब कर लेते हैं, एज इन करना तो है ही, बट ये दिस बैक्स माय डिसीजन. हाँ,
So that was the thought behind कि हाँ देन ये करा जा सकता है, but it was more out of passion than रिसर्च करते कि हैं, देखते हैं रिसर्च, क्या एक्सेप्टेंस है, वो सब ग्राउंड वर्क नहीं किया था, बस सोचा था कि चला लेंगे, कर लेते हैं। हाँ हाँ, बट देन व्हेन रियलिटी हिट्स, फिर क्या हुआ? फिर क्या क्या पता चला व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड कि नहीं चलो करते हैं, कन्विक्शन के साथ पैशन के साथ चालू कर दिए, फिर क्या क्या पता चलता गया मार्केट के बारे में? I तो तुम think I उसमें, would have still continued as a football only platform, या आई आल्सो थिंक सो। हाँ but the problem was, I had to make a choice between. I mean, I won't say I had to. I think थोड़ा और risk taking appetite होता वो time पे, या थोड़ा और you know हाँ confidence होता I'd say, then I हाँ would हाँ have continued as a football only platform. हाँ। But at that point, you're very early in the journey. आपको भी पैसे रेज करने हैं, एंड ऑल इन्वेस्टर्स आर टेलिंग यू कि क्रिकेट नहीं है तो फिर कैसे ही चलेगा इंडिया में. सो दोज थिंग्स गेट टू यू वेरी इजीली, तो आपका कन्विक्शन तब आराम से शेक हो जाता है. यार ये हाँ। तो वीसीज है, ये इन्वेस्टर्स है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सब एक साथ कर रहे हैं, तो इन लोग को कुछ पता होगा जो मुझे नहीं पता. एंड राइटली सो, क्रिकेट इज द बिगर थिंग इन इंडिया. सो बिजनेस सेंस इज दैट you get cricket. हम्म, But I mean, in hindsight, I think if I have the knowledge that I have right now, if I had that back then, I think I would have been able to continue with football. तो अभी क्या है नॉलेज वो कि तुम वो कन्विक्शन बैक कर पाते हैं उस टाइम पे? अब That क्या it's रियलाइजेशन हुआ है? it's more about the type of operations जो आप contest वगैरह दिखाते हो. It's about the team you have, and it's about numbers, कि आप किस तरह से अपील कर पाते हो यूजर्स को. It's about your product in general as well, कि किस टाइप का एक्सपीरियंस है, and ultimately it's about branding. If you brand yourself in a certain way, if you keep growing that uh, you know visibility in people, हाँ then over time, through enough hard work, you will become recognized as a कि यार नहीं, ये फुटबॉल के लिए तो इनके पास ही जाऊंगा. हम्म, क्योंकि मैं भी जब यू नो आई वाज लिसनिंग टू, आई वाज गोइंग थ्रू अ स्टोरी वो सब, मुझे भी लगा कि क्यों चेंज किया कि व्हाई यू जस्ट नॉट बिकम बिग एज अ फुटबॉल फैंटेसी ऐप ओनली, तो क्लियर डिफरेंशिएशन आ जाता मार्केट के अंदर। ट्वेल्थ मैन इज जस्ट फॉर फुटबॉल, and the way, like, because I am also a big football fan, so the way फुटबॉल इन जनरल, मुझे आईएसएल वो सब तो नहीं पता, बट यूरोपियन फुटबॉल की वॉचिंग बहुत बढ़ रही है। हम्म. तो अगर वो बढ़ जाता तो शायद, तो क्या था कि यू यू लाइक यू कैन बिकम राइट प्लेस एट द राइट टाइम एज अ प्लेटफॉर्म राइट नाउ ऑल्सो, कि जब तुम वो कर लो। बट द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क यू इज कि तुमने ब्रांडिंग का बहुत मेंशन किया है, कि और तुम्हें हैवीली करना पड़ेगा वो उसमें इन्वेस्ट, तो डू यू थिंक कि एक फंडिंग लेनी बहुत रिक्वायरमेंट हो जाती है इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप इन दिस स्पेस, कि फंडिंग इज Yes. प्रीरिक्विजिट? Yes. 100%. एंड क्योंकि कैन, गेमिंग स्पेस हाँ is has become really difficult because of the kinds of discounts, and या just in general the space really, I think, थोड़ी shaken up हो गई because of the amount of money that was put in and the amount of burn that startups did just to acquire users. तो अब एक बार बेंचमार्क सेट हो जाता है तो फिर उससे उसे चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट दैट बीइंग सेड, while funding is required, I also believe that this space holds the potential कि if even if you don't spend enough, and if you do things a certain way, and that would of course involve cutting down your marketing expenses to its bare bones, uh, you can still run a profitable operation. हाँ हाँ, राइट। और यू नो ये फंडिंग वाली बात तो निकल गई, बट
डू यू थिंक कि फैंटेसी वाले स्पेस के अंदर प्रोडक्ट, चलो ठीक है, प्रोडक्ट तुम्हें अच्छा बनाना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी स्टार्टअप, वो सब ठीक है, बट इस फील्ड के अंदर पर्टिकुलरली तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल, वो तो फिर लाके सौरव गांगुली वो सबको रख देंगे, दे आर ऑन हॉटस्टार ऑल द टाइम व्हाइल द मैच इज गोइंग ऑन, वो सब। तो छोटे प्लेयर्स के लिए वो बहुत ज्यादा यू नो टफ बन जाता है कि कंज्यूमर साइकी में वो घुसे। 100%, एंड दैट गोज बैक टू ये ब्रांडिंग वाला। हाँ हाँ मेरे मेरे जो पॉइंट्स थे कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ तो Product is more about organic हाँ। and product market fit. So when you have the perfect product market fit, your organic growth is the maximum. हम्म। क्योंकि तब the word about your product spreads like wildfire to the relevant people, of course, not everyone. So राइट product market fit जब perfect match होता है तब आपका बहुत ही rapid growth होगा। राइट। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पेस में हुआ ऐसा है, अगेन दीज आर जस्ट माय ओपिनियंस, हाँ 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 ये स्पेस में कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है, and not just this space, you look at all the startups which are burning heavily and not generating anything हाँ। or generating losses basically. What's happened is kahin na kahin forced product market fit hua hai. Product has been, shoved down people's throats कि यार यही है, यही लेना है आपको. हम्म। कि तुम्हारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। Yeah, so you're essentially, what you're trying to do is there's this puzzle and there's this piece required to complete that puzzle. What you're doing with forced product market fit is कि you are pushing that piece in even though it's bigger than what the space requires, and आप ऐसे दबा दबा के तोड़ मोड़ के घुसा रहे हो वो पीस को कि हाँ ये है प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपने फिट कर दिया है उसको फोर्सफुली बाय रिपीटेडली throwing it on people's faces, बड़ा पैसा हाँ स्पेंड कर, हाँ एंड देन टू एंश्योर कि वो रहे, रिटेंशन रहे, लोग आते रहे, आपने डिस्काउंट्स, कूपन्स, ये वो, यू एसेंशियली थ्रोन कैश एट हाँ। पीपल। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है अभी स्पोर्ट्स? पहले ये क्या जानते थे कि पीपल हु आर प्लेइंग फैंटेसी स्पोर्ट्स राइट नाउ इन इंडिया, उनका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है मोटा मोटा? I mean, I'd say in general that there's no as a 100% brand loyalty. There is a preference. People tend to Dream 11 because that's the first name they hear. Dream 11, My 11 Circle, जो भी है. हाँ But there's no as a platform loyalty. हाँ So people will jump from platform to platform. क्योंकि it's also about the competition they face. छोटे प्लेटफॉर्म्स पे कम लोग जानते हैं तो कम कंपटीशन होगा तो जीतने का चांस ज्यादा है। मैं जीतूंगा पैसा, मैं पैसा विड्रॉ करूंगा, बैंक अकाउंट में जाएगा, मैं वो बड़ी ऐप में फंड करूंगा मेरा वॉलेट, वहां पे कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करूंगा। सो इट्स ऑल्सो दैट, कहीं ना कहीं। राइट। हाँ, ये सेकंड वाला इंटरेस्टिंग है। मैंने ये अपने कोई कोई फ्रेंड्स को देखा हुआ है कि वो लोग ना ऐसे छोटे छोटे वाले ऐप जो मतलब दे आर, इफ दे आर नॉट बिग प्लेयर्स, दे यूज दैट एज द अर्निंग मनी हम्म। लाइक एप्स, और फिर वो जाके फिर वो उसको ड्रीम इलेवन में डालता है कि वो हम्म। बिगर पाई मिल पाए ऊपर। सो दीज काइंड ऑफ टैक्टिक्स यू आर यूजिंग कि आपका जो ऐप है कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूज करे पर डे, so there are या high chances कि वो या फैंटेसी में बिकॉज फिर। आई मीन सिंस आई ऑलरेडी टेकन द डिसीजन कि चलो अब ये फुटबॉल ओनली नहीं है, नाउ आई वांट टू एंश्योर कि व्हाट कैन आई डू बेस्ट दैट मेक्स दिस ऐप रेलेवेंट बिजनेस वाइज. So sports take place 300 out of 365 days, for example, and not throughout the day anyway. So you want maximum engagement on your app. तो वो games ही ला सकते हैं. So then it becomes a question of how you want to promote those games. What do you want to do to make sure that the games actually end up providing a larger share of the revenue? क्योंकि ज्यादा अपॉर्चुनिटी गेम्स के पास ही है, तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही. ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, बस यू हैव टू फाइंड द राइट वे. राइट राइट। और लाइक इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग के फ्रंट पे क्या सोचा है? लाइक व्हाट आर सम ऑफ द प्लान्स की डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाए, लोगों को और ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो अबाउट ट्वेल्थ मैन। तो
What are some of the So things that you guys are looking? branding exercise, actually it's ongoing abhi. I've reached out to a big agency, अच्छा. Indian. Uh, so basically my discussion with them was कि 12th man is currently, let's say, point A पे. I want to get them to point B. We have 12 months. I'm going for series A. So what money should I raise specifically for branding so that we can get from point A to point B? So वो planning चल रहा है ताकि from May या कुछ we can hit the ground running and don't have to worry about कि ब्रांडिंग के लिए इतना रखना पड़ेगा साइड में, ये वो हमें पता है कि ब्रांडिंग के लिए इतना जाने वाला है, तो ये सिर्फ ब्रांडिंग का ही पैसा है, ब्रांडिंग नहीं, मार्केटिंग इन जनरल. सो वी आर गोइंग टू मिक्स आवर मार्केटिंग ऐसे 60 या 70% ब्रांडिंग एंड 30 और 40% ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग. Okay. And एंड वी आर एक्सपैंडिंग टू द यूके नेक्स्ट ईयर. अच्छा, यूके में भी चालू कर रहे हो? ओके. एंड राइट नाउ हाउ मेनी ऐप डाउनलोड्स यू हैव? आई थिंक 1.3 million. 1.3 million. Hmm. That's a good number or it's better? I mean, it's a good number to show, but it's a vanity metric. What matters is your DAUs, how frequent your retention, and how many repeat users you have. So मैं बहुत थ्रिल होता था कि ओहो 100,000 डाउनलोड्स, ओहो 1.5 लाख डाउनलोड. लेकिन फिर वो 1.5 लाख के बाद वो फंडा मर गया क्योंकि आइडिया आ गया कि नहीं, ये 1.5 लाख डाउनलोड करने के बाद क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि 1.5 लाख आपके डाउनलोड हुए हैं और फिर मान लो नहीं 1.5 लाख डाउनलोड हुए और मान लो 1 लाख ने अनइंस्टॉल कर लिया, तो वैसे तो 50,000 ही ढंग के डाउनलोड हुए. हाँ. वो 50,000, चलो वो 1.5 लाख डाउनलोड में से फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर कितनों ने किया, तो रजिस्ट्रेशन रेट अक्रॉस द इंडस्ट्री समवेयर अराउंड 50-60%. तो फॉर एग्जाम्पल आप 1 लाख डाउनलोड पकड़ो 50-60%, तो 50,000 60,000 ना. ठीक है. और आपके वो 1 लाख डाउनलोड में से मान लो 80 लाख तो अनइंस्टॉल है, तो वो 30,000 लोग ने तो एफर्ट भी नहीं डाला इंस्टॉल करने, अरे रजिस्टर करने का, ऐसे ही कर दिया, और बाकी थोड़े जिन्होंने रजिस्टर करा था उन्होंने भी अनइंस्टॉल कर लिया. सो वंस यू स्टार्ट डाइविंग डीपर यू अंडरस्टैंड कि यार ये सब डाउनलोड्स रजिस्ट्रेशन सब फालतू की बकवास है. यू हैव टू लुक एट डेली लेवल पे एंगेजमेंट क्या है, एंड या कितने रिपीट यूजर्स है आपके. दोज आर द ओनली थिंग्स दैट मैटर. ऐसा सब कुछ कुछ सोचा है कि ऑर्गेनाइजिंग लाइक टूर्नामेंट्स इवेंट्स बाय द नेम ऑफ यू नो 12th मैन की? सपोज मान लो कि इंटर कॉलेज टूर्नामेंट तुम लोग ही ऑर्गेनाइज सोचा कर. तो सोचा इतना सारा, राइट. लेकिन राइट. इतने सारे को हम्म. क्या कर सकते हो वो देखना. राइट. व्हाई डिड यू डिसाइड टू गो ऑन विद अहमदाबाद ओनली? व्हाई नॉट बैंगलोर और मुंबई? बिकॉज वहाँ No, पे we have offices in Ahmedabad and Mumbai. यू हैव ऑफिसेज इन अहमदाबाद और मुंबई. ओके. बैंगलोर क्यों नहीं सोचा? बिकॉज टेक प्रोडक्ट है तो अच्छा नहीं रहता बैंगलोर? कि तुम्हें कोडर्स और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और वो सब अच्छे मिल जाते हैं, लाइक तो इवन मैं एक यूआई फन यूएक्स. फैक्ट बताता हूँ. हाँ. बहुत सारे कोडर्स जो बैंगलोर में है वो अहमदाबाद से भी आते हैं. हाँ. यहाँ पे इतनी टेक कंपनीज नहीं है फॉर्चुनेटली. अभी बिल्ड हो रहा है स्टार्टअप हब, एज अ हाँ. स्टार्टअप हब अहमदाबाद. हाँ. तो जो यूजुअली गुजरात में डेवलपर्स होते हैं वो आता है अहमदाबाद या हाँ. सूरत, वन ऑफ द हम्म. बिगर सिटीज. हाँ. उन्हें जो यहाँ पे मिलता है इज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट दे कैन गेट इन बैंगलोर. सो एज सुन एज दे रियलाइज कि बैंगलोर में हमें ये मिलेगा, तो दे टेक अप ऑफर्स फ्रॉम बैंगलोर. वरना इट्स गुड फॉर टेक कंपनीज हियर टू गेट पीपल. राइट. सो The तुमने. only problem is कि for the हाँ. only problem for Ahmedabad is attracting young crowd from those cities to here. या. क्योंकि if you're young, you want to have a social life, you want to go to pubs, you want to go to bars, you want to, you know, church gate social जाके बैठना is more fun than हाँ. church ड्राई street. स्टेट भी. Sorry, not church gate.
ड्राई स्टेट भी अफेक्ट कर जाता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ गुजरात. Correct. इंटरेस्टिंग. तो अभी टीम कल्चर क्या है? लाइक व्हाट आर सम ऑफ द ethos values that you guys follow rigorously? So one thing uh, so I've told everyone one thing, ki I want everyone to sort of work here as, a team, of course, but I want them to build lifelong relationships over here. And I want everyone to work towards elevating the person they're sitting next to, as opposed to कि मैं कितना progress कर सकता हूँ, वो तो करो ही, लेकिन your objective should be कि how can I be the best brother or a sister to the person who I'm working with. So that's my only requirement. Be nice to others, be kind to everyone, be helpful. And I want everyone that comes on board to come on board with a warrior mentality. कि काम करना है तो करना है, एंड जितना करना है उतना करना है, और जान लगा देनी है काम करने में. Right. And what's a straight up no for you when you're hiring? कि बस ये नहीं चाहिए ही नहीं. A straight up no for me while I'm हाँ. hiring. What puts you off in like during an interview or when you're hiring someone? कि अगर वो दिख गया तो फिर नहीं यार. So I think one of the big giveaways when you're hiring for a senior position, one of the things that annoys me is अगर मैं senior resource hire कर रहा हूँ VP level या C suite में किसी को, हाँ. if they only talk about themselves, हाँ. and क्योंकि आपको बात से ही पता पड़ेगा कि अरे यार मेरी टीम ने ऐसा किया था, ये वो, यू विल सी के दे गिव द क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, एज अपोज टू कि मैंने ये करा, ये करके आया हूँ मैं, ये वो. So if I don't see that, that's a big red flag for me. And at the same time, if they aren't giving credit, then they'll never also be able to openly talk about their mistakes. आप बोलोगे ना उनको, एक क्वेश्चन पूछोगे, what have been your biggest lessons या mistakes, you'll never get a satisfying answer. Almost never. हाँ. Yeah. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था तुमसे. लाइक व्हाट्स दैट वन बिगेस्ट मिस्टेक यू डिड विद 12 मैन? क्लीशे क्वेश्चन है पर हाँ. I have done many, and हाँ. every mistake at that time seems like the biggest mistake. Okay, so there are two. I'll give you two. हाँ. One is product side pe, and the second is organization side pe. Product side pe was that thing that led to the May to July ka mayhem. So because of IPL, we had a big surge on our platform users ka, which is a good problem to have because it's a growth हाँ. problem. हाँ. हाँ. Now, in hindsight, we should have expected a surge. I don't know why we didn't, and we should have started work on improving our architecture much before we started. But basically, what we did was we released an under tested update. तो फिर जो भी मिस्टेक्स, मतलब बग्स वगैरह आ सकते थे, वो आए, एंड यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब हो गया. So it took us 2 months to fix the platform properly. And at that point, our revenues dropped as a 60-70%. In terms of organization, I'd say, giving away a C-suite position too easily. And yeah, I think that's the big thing I'd say organizationally. So the thing is, you don't really need to hand out your C-suite positions for free, because that will usually come with some form of equity that you'll also hand over, and that comes with a lot of power and privilege, which you don't sort of realize when you're hiring. That that can be used as a way of, I'd almost say, tormenting the people below that position. So I had a bad experience in that regard. So I'd always say, when you're going to hire, have your, I mean, this is all very cliched. आप टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ते हो, एंड लोग भी कहते हैं, लेकिन करने को आता है तो आपको लगता है अनइम्पोर्टेंट है. बट I don't know why I'm saying this, because I always found it this way. But create an organizational chart
एंड इवन इफ यू डोंट क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, वैसे कुछ और भी बुलाना हो, जो भी नाम रखना हो, बस एक ध्यान रखो कि आपको क्या टीम्स बनानी है और क्या लोग चाहिए। फिर कुछ भी लेबल दो, वीपी दो, हेड दो, बस सीएक्सओ मत दे दो, क्योंकि पैसा भी बचेगा एंड मैनेज करना भी आसान होगा ईगोज। सो एंड यू डोंट नीड योर सी स्वीट पोजीशन अंटिल योर टीम बिकम्स टू बिग फॉर यू टू हैंडल, कि अब आपको सेपरेट करना पड़ेगा कि अब मैं मार्केटिंग के लिए एक सीएमओ ले ही आता हूँ तो वो ये सब चीजें वो देखे, अब मैं टेक के लिए सीटीओ ले ही आता हूँ ताकि प्रोडक्ट अब कॉम्प्लेक्स हो गया वो देखे। So that's how you should hand out your C-suite positions. In my experience, again, there's nothing wrong with starting off with मैं सीएमओ ला रहा हूँ, सीटीओ ला रहा हूँ, सी जो भी एचओ, एचआर का चीफ वट एवर ला रहा हूँ, और फिर उनके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग ये हायर करो, ये हायर करो, ये करो, मुझे तो बस आप चार से डील करना है। There are people who do that. So that's the thing that I've also learned कि there's no one way of building or running a business. कुछ सेट ऑफ रूल्स वगैरह नहीं है, कोई केस स्टडी काम नहीं आती जब तक आप केस स्टडी खुद से नहीं बन जाते। आपके साथ कुछ होगा तब आप सीखोगे। That's a great line. Huh? हाँ। Lovely. And you talked about let your mistakes and move, but like ये बात जो तुमने जो चीजें बोली, like these are very like overwhelming feeling वाली, जो तुमने starting में बोला कि you didn't feel like coming to office and all, but so when you are going through this overwhelming emotion and वो सब, so like how do you tackle with that situation, और किस तरीके के फिर वो whom do you fall to like in terms of person, किससे बात करते हो आप, किस तरीके से करते हो, how do you tackle your overwhelming emotions, वो वाला period? So for me, I mean, I'm lucky to have my father as my mentor. Hmm. Uh, so I always have him to lean back on. But I've also been lucky to have 3 or 4 really close friends who who've known me from the longest time, third standard, fourth standard, sixth standard. So I just know that, they'll be good sounding boards for me. And I think when you start a business, I mean, ये hustle culture वगैरह जो है, all well and good. If you can do it yourself by all means. But कहीं ना कहीं लोग ये भूल जाते हैं कि running a business is taking on a lot of responsibility. हाँ. So I'd say if you aren't skilled enough to handle all that responsibility, then there's nothing wrong with relying on people and getting the support you need. हाँ. क्योंकि what people misunderstand is कि, and I also went through this, which is why I'm sharing my experience, कि नहीं नहीं मैं तो खुद से ही करूंगा, I'll do it myself, I don't need anyone's help, if I take someone's help तो I'm not a successful entrepreneur. क्योंकि at that point this all ties back into your Instagram and LinkedIn, जहाँ आपको बस दिखाना है कि मैं हूँ, this is me, I know what I'm doing, I am established, I am a CEO, हाँ. मेरा धंधा है। हाँ. But it's not that at all. It shouldn't matter what कोई और कहता है कि यार ये तो अपने बाप के पैसे से चला रहा है बिजनेस, यार इसको तो फंडिंग इसलिए मिल जाती है क्योंकि बहुत अच्छा नेटवर्क है, तो वीसीज आराम से पैसा दे देते हैं, यार इसका तो ये लक है, इसके पास तो बहुत ही फैमिली मनी है, इसको तो कुछ चिंता की जरूरत नहीं है। ऑल दैट इज वेल एंड गुड। Different people come from different scenarios, they have different accesses, different privileges. You can't complain about that, and that in no way indicates their skills or whatever. Sure, I might not be as great at raising money, but I'd say I'm much better at managing people or empathizing with people. I might be great at product, but I might not be great at marketing. So कोई perfect नहीं है, कोई कुक बुक नहीं है धंधा चलाने का। बट वन थिंग इज गारंटीड, हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। हेल्प लेने से मत शर्माओ, हेल्प लेने से छोटे नहीं बन जाओगे। एंड दूसरों के लिए बिजनेस नहीं बिल्ड करते, आप अपने लिए करते हो, आपकी लेगेसी छोड़नी है एंड खुद की वेल्थ आपको क्रिएट करनी है।
वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, फिर जो लोग बोलते हैं वो भी चुप हो जाएंगे। एंड आपका ऑब्जेक्टिव उन्हें चुप करना है ही नहीं। यू हैव योर ओन ड्रीम्स, यू हैव योर ओन एस्पिरेशंस, एंड इफ दैट रिक्वायर्स यू टू you know build a large chunk of wealth, as in for me my dream is to own a League 2 football club in the UK, which is the fourth division, and then take that up to the Premier League. Right. And I want to do that by the time I'm 40. So that I'd say is a realistic target. Over here I have a list of all the League 2 clubs that are available. हाँ, सबसे फेवरेट And कौन है? हाँ, सबसे फेवरेट कौन सा क्लब है उसमें से? उसमें तो कोई फेवरेट नहीं है यार, जो भी अफोर्डेबल हुआ एट दैट पॉइंट we'll go with that. ओके, But the point I'm trying to make is that you're walking your own path, you're living your own journey. राइट। अभी पूछना है सबसे क्लीशे क्वेश्चन जो तुमसे पूछा गया होगा बहुत ही बार, ये सब बार, बट सुनील छेत्री एज ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, तो स्टोरी मुझे थोड़ी थोड़ी मालूम है, बट आई वांट कि इतने ज्यादा तुमने पॉडकास्ट उसके लाइक एज एन एंटरप्रेन्योर ज्यादा नहीं किए हुए, आई जस्ट वांट कि तुम बताओ हाउ डिड दैट हैपन, एंड देन आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस उसके बाद। It's a pretty straightforward story, actually, which is surprising to most people. हाँ, हुआ ऐसा that I was sitting with my tech team, agency that was building the app at that point, and we were going through different platforms, and they're like, "Who are you thinking to get on board as a brand ambassador?" And एक सेकंड भी नहीं लगा होगा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं, बस ऐसे निकल गया मुंह से सुनील छेत्री। हाँ, तब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ब्रांड एम्बेसडर लाऊंगा, एंड बस सुनील छेत्री निकल गया। क्योंकि एट दैट पॉइंट दिस वाज फैंटेसी फुटबॉल, छेत्री बीइंग छेत्री, द बिगेस्ट इन इंडिया हाँ, in terms of football, uh, third active highest international goal scorer, all those हाँ, things. So I go to his Twitter, I see an email address, that's his manager ka email address. I reach out to them over email. They get back to me in a few hours. I'm talking to them over the call next day. Uh, we negotiated over a few weeks. Then November 2019, they flew down to Ahmedabad. We finalized the terms. December 20th, I flew to Bangalore, met Chhetri in person with one of my best friends, हाँ, and of course the managers. Signed the contract, got a few pictures clicked. Then January 6th, the contract became live, and Chhetri was on board. And May 23rd, we officially announced him as our brand ambassador. किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होता है? आई जस्ट वांट टू नो दिस कि क्या होता है कि फॉर दिस एक साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर आपके स्ट्रक्चर क्या होता है डील का? It's usually along the most important parts of these contracts are कि कितना टाइम छेत्री देगा अपने सोशल मीडिया पे आपके लिए, कितना कंटेंट डालेगा आपका छेत्री, और whatever XYZ brand ambassador, हाँ, how many days he or she will give you for photo shoots, how many days will he or she give you for PR events. That's the crux of the कॉन्ट्रैक्ट। बाकी सब तो लीगल चीजें होती है कि व्हाट आर द एक्सक्लूसिविटी, डूज एंड डोंट्स। आप आपकी हाँ, ब्रांड के साथ ये नहीं कर सकते छेत्री के साथ, या वट एवर XYZ ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा कोई दिस इज क्लॉज था कि वो दूसरे कोई फुटबॉल फैंटेसी आपके साथ टाइप नहीं कर सकते? या सो एक्सक्लूसिविटी क्लॉज, सो वी हैड दैट। राइट, इंटरेस्टिंग। और उसके बाद सपोज मान लो कि अभी टिल डेट ही इज योर ब्रांड एम्बेसडर, और नो, सो आवर कॉन्ट्रैक्ट एंडेड विद हिम मई एंड में। हाँ, या या तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है सर, टिल टाइम जो तुम लोगों ने उनके साथ ब्रांडिंग की है वो तुम रीपर्पस कर सकते हो वापस से कि इफ नहीं यू नहीं नहीं। डू इट? नहीं, नहीं कर सकते। देन यू कांट यूज एनी ऑफ हिज प्रीवियस क्लिप्स और So एनीथिंग। after the contract ends, you get a 30-day window to stop all your activities with that ambassador. इंटरेस्टिंग। खेती वाली बताओ ना, ऐसा कुछ, ऐसे नहीं कि सीरियस वाली ऐसा कुछ, बट हाउ हाउ यू रेट हिम एज अ पर्सन? कि वैसे तो बहुत So ऐसे इंस्पायरिंग फन पर्सन लगता है बाहर से तो। exactly. So Sunil Bhai is exactly how he comes across on videos, on his हाँ, Instagram. Ekdam down to earth, really fun to talk to, super professional, and this gives good
advice about everything, and he's caring. He will never make anyone feel like I am Sunil Chetteri and you are this. That will never be the case. He Hmm. will be respectful and courteous to everyone. And I had the good sort of fortune of spending almost 2 days with him, if you count in total during the shoots. And you know, it's just fun to talk to him. He'll just be one of the people. He'll sit, देखेगा shoot कैसा हुआ, गपशप करेगा. एंड ही इज ऑल्सो द काइंड ऑफ पर्सन, सो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स में ड्यूरेशन होता है शूट के, कि शूट इतने घंटे से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, हाँ विच इज यूजुअली 1 work day, so 8 hours. हाँ. So in Sunil bhai's case, the kind of person he is, if कुछ मान लो issue आया and you still need a couple of hours more to complete what you had set out to do, he'll give you those 1-2 hours. He'll get the work done. Very nice guy. A gem of a person, genuinely. Very fun person to be with. Right. So, last question, one advice for budding entrepreneurs and one advice they should definitely ignore. रिसोर्स है यूज करो, नेटवर्क है यूज करो, घर पे पैसा है यूज करो, शर्माओ मत. लोग कहेंगे, लोग जज भी करेंगे, वो हाँ. करने दो. योर फोकस इज कि स्टार्टअप्स फेल, ओके, 9 out of 10 स्टार्टअप्स फेल. सो आपका फोकस होना चाहिए कि वो रिस्क कैसे कम करो, हम्म. और वो आप आपके लिए कर रहे हो. फेल होने हाँ को हाँ. कर रहे हो तो वो सब नहीं है. एंड द सेकंड थिंग इज कि यस, यू शुड डू थिंग्स बाय योरसेल्फ, बट द एडवाइस की कीप हसलिंग, move out, drop out, move out of your parents' house, ignore all that crap. क्योंकि हाँ. building a stressful business requires some level of comfort and support that only your parents, your friends, your family can give you. So Right. you want to use all those, as you want to take as many advantages as you can get. So why won't you? हम्म. And the other thing is कि be aware. नो, मतलब नो कि ये नहीं हो पाएगा, एंड हायर अकॉर्डिंग टू दोज नीड्स एंड टेक हेल्प अकॉर्डिंगली. Right. Don't try to do everything yourself. So Right. yeah. Right. Yes. So thank you so much, Kush, for doing this. I had a really good time. So मुझे did तो I. मजा So did I. मुझे अच्छे मजा आ questions गया. पूछा. हाँ. Thank you. So that's it from today's episode, guys. I hope कुछ के जो insight थे about entrepreneurship, leadership, about sports fantasy industry in India, आपको ज़्यादा insight मिले होंगे, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस episode में से. तो अगर आपको ये episode अच्छा लगा हो, then please do drop a like, share this video with your friends and comment down your 3 learnings from this episode. And also don't forget to subscribe to our channel and hit that notification bell to get regular updates from our channel. Thank you so much.